Good evening, everyone. The meeting will start in next 2-3 minutes. Please be there. Thank you.
Hello, dear students and dear parents. We'll be starting in next 5 minutes. Good evening, everyone. So today we are starting with our meeting, and it is about the crash course for JEE NEET 2024 information. Sir, we can start the meeting. Thank you. Okay, thank you very much. A very good evening to one and all, dear students, dear parents, and the people who will be managing this crash course, the coordinators and the faculty. This is a high time, and we are at that stage where we must understand how this crash course is going to take place and how we can get benefit out of it. I have specially invited parents also because students, they know something because it is displayed in notice boards, or maybe uh, faculty has discussed everything. But this information doesn't go to the parents. Just a second. आभा मैडम प्लीज म्यूट करो इनसाइट को. Everyone who has joined Zoom for broadcast, please mute. अदरवाइज वो रिपीट होते रहेगा यहाँ पे. Okay. So we begin our session. It is not going to be a very long session, but I'll try to give you the most important points which everyone must know. And this being broadcast on YouTube, तो YouTube के chat box में आपकी queries अगर सच में है, genuine queries है, तो आप उसमें भेज सकते हो. And if possible, I'll try to answer in this session, or maybe I'll be answering separately. A very important thing parents also must please note, this is a final testing time. You may ask me, आपके मन में डाउट हो सकता है अभी तो बोर्ड खत्म ही नहीं हुआ है, ये क्या बात कर रहे हैं. But let me tell you, the dates are like that, and the situation every year is similar. So this is a final testing time, and we therefore request all of you to sync with our planning. And I have told this several times earlier also to all the students that whatever you are putting hard work, if it is not exactly as per the final exam pattern, then the efforts are wasted and you end up in frustration.
So whatever practice you are doing, it has to be same way they are supposed to write final exams of JEE हो गया, board हो गया, CET हो गया, NEET हो गया, whatever it is. Let me put before you the target dates, even though I know you are already aware of this. JEE Main 2024 session 2. All of you know that it is going to be in fully CBT mode, just like the session 1, that is the January session, except for paper 2. And most probably that paper 2 now will be on 4th. And after 2-3 days gap, they will be starting with CBT. The moment JEE Main session gets over, MST CET for PCB group will be starting from 16th April to 23rd April, again fully in CBT mode. जब वो फिनिश हो जाता है तो MSTCT PCM again fully in CBT mode will start from 25th April to 30th April. So this is a duration they have given, but every student has to appear for examination only on one day in this schedule. So the remaining days they will have to utilize for their own benefit. NEET. It is going to be in pen and paper mode on 5th of May. And those who qualify the second after the second attempt, those who qualify the JEE Main examination and become eligible for JEE Advanced, for them there will be two papers on the same date, P1 and P2, and this JEE Advanced is going to be again in fully CBT mode and will be conducted on 26th May 24. Now this is known to everyone. What are the challenges? Challenges are the HSC is yet to be completed. Main papers are over, but bifocal subjects will be having on 12th March and 14th March. And most probably the IT, those who have taken IT, they will be having papers or the practicals on 20th March and 21st March, probably. CBSE is always in great trouble. You do not realize this when you opt for board, but this happens every year. They have got 12th March physical education is there. 19th March, the main core paper biology is there. This is going to be troublesome for the NEET people. And those who have opted for the computer science, it will be on 2nd of April, just one day before your other examinations are starting. So it's a difficult task. We'll be having one holiday, and that will be Holi, maybe on 25th. Other than this, we cannot, in fact, think of wasting any single day. So we have no option but to plan a crash course. So we have done it, and we have distributed the information to the students. So this crash course is to take care of JEE Main session 2, followed by JEE Advanced, or followed by MST CET, PCP or PCM. And then for NEET, also we have to take care of HSC and holidays and maybe CBSE also. फॉर जेई, अगर आपको अभी ये तीनों एग्जाम्स जेई वालों को तो जेई भी देना है, सीईटी भी देना है, एडवांस की तैयारी भी अगर एलिजिबल है तो करनी है, तो इट इज ए चैलेंजिंग जॉब. सो वी हैव प्लान्ड 4 group tests, and these 4 group tests will be pen and paper mode. 4 group tests का मतलब है जो 11-12 का सिलेबस है. प्लीज रिमेंबर सीईटी सिलेबस आल्सो इज सेम. The weightage of questions from 11th and 12th, they have specified, but the authorities themselves say that the level is at par with JEE Main. So as far as the course is concerned, as far as the syllabus is concerned, whether you are preparing for JEE Main, Advanced or CET, PCM group, you have to study the same thing.
So we have divided the total syllabus in 4 parts and we'll be having 4 group tests in pen and paper mode to begin with. What we have done that these group tests will be concurrently running for JEE Main and MST CET, PCB or PCM. The times will be different. So those of you who want to write only JEE Main, they can do that. If you want to write MST CET, PCM, you can do that. If you want to write MST CET, PCB, you can do that. Or even if you want to write MST CET, PCMB, all 4, you can do that. Times will be different. Or you can write JEE Main as well as MST CET. आपकी जो तैयारी है, आप जहां पे कंफर्टेबल है, वो आप कर सकते हैं. ये ग्रुप टेस्ट जो है, हर ग्रुप टेस्ट के पहले 2 दिन का टाइम हमने रखा है, जिसमें ओनली पॉसिबिलिटी इज क्विक रिवीजन. नाउ प्लीज रिमेंबर, 4 ग्रुप में हमने अगर सिलेबस डिवाइड किया है और टोटल टॉपिक्स पर सब्जेक्ट अगर एवरेज में 100 है, तो हर एक ग्रुप में कितने टॉपिक्स आएंगे? बहुत सारे आएंगे एंड वी डोंट हैव ऑप्शन. बट मेन हेडिंग्स हमने डिस्प्ले किए हैं और मेन हेडिंग्स के हिसाब से ये 2 दिन में क्विक रिवीजन फैकल्टी इज सपोज टू कंप्लीट. सो यहीं पे मैं बताना चाहता हूं कि डोंट एक्सपेक्ट दैट इट इज अ फुल रिवीजन. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो टाइम. If there is 1 month time, we can do something else. If there are 6 months time, we can do something better. If you have got 2 years, we can do still better, but that is not there. So 2 दिन में ही हमको ये करना पड़ेगा. So you should keep in mind कि हमको खुद से भी प्रयास कुछ करने पड़ेंगे. एटलीस्ट चैप्टर्स जो है, जो टेस्ट में आने वाले, उसको रीडिंग कम से कम रैपिड रीडिंग तो भी लगाना चाहिए. After the test, there is going to be discussion and doubt clearing as usual. So if this works well and there is complete sync between the students and the insight, then I think they will get benefited. The moment this is over, we have to start with the full course test. सेशन 1 के पहले भी हमने लगभग बहुत सारी सीपीटी और बहुत सारे पेन एंड पेपर लिए थे. उसके पहले रिवीजन एंड बूस्टर सेशन में ग्रुप टेस्ट भी हुई थी. अगेन वी आर doing the same thing. So we have planned 6 CBT mode tests for JEE Main session 2. And along with it, concurrently, I will not say concurrently, on the same day or maybe at different times, we'll be having 6 for MHT CET, PCB or PCM. So students, depending on their maybe the level of study or the interest or whatever it is, they can choose to do anything out of this or all the things. ये शेड्यूल शायद आप सभी के पास में कोई ना कोई चैनल से पहुंच गया होगा. आई जस्ट एक्सप्लेन टू इट, एक्सप्लेन दिस सेम थिंग. Yeah, this is the JEE crash course for main, advanced CET, everything. Biology syllabus for MSc CET I have not given here, but I will give it. So you can see, I'll just discuss the first test, which is going to be on 10, that is tomorrow only. So there were this much content was there for physics, chemistry, and mathematics. Hopefully, those who have been attending from 8th, something must have been done there. Faculty has said that they have done quick revision, and really speaking, it is a crash course. If you don't understand the meaning, you will get crashed or crushed. So please understand the
limitations, and this is the best we can do. So on 10th, then on 17th. Why 17th? Why not 14th? Because in between the 3 days will be lost in the board exam. So 17th. After that, 22nd, because again 1 or 2 days will be lost in IT. After that, 27, because again 1 day will be lost in holy holiday. And so by this time, 27th will be finishing with the 4 group tests. And from 29th onward, we'll be having the JMN full course test. At this point, I'm not conducting the CBT. CBT timetable I have given separately, because the first you will have to face JEE Main, and after that you have to face the CBT, I mean MST CT. However, if there is a demand from students that they want more tests or something exclusively for CET, and they are not doing anything for JEE Main, then they should come to the center and give their suggestions or the information. We can arrange something different for this group. But today, I do not know who is interested in what. So this is a general timetable. Dates I have given: 4 April to 15th April JEE Main, 24 to 30th MST CET PCM. I have not given date for PCB, that is before, I mean 16 to 23rd. And 26th May happens to be the JEE Advanced. So I have put here a note also. The moment your JEE Main session 2 is over on 15th, we'll be starting with the preparation of JEE Advanced training. Please do not wait for results to come, because results may take another 1 week and you will be losing that time. So if you are certain that you have already cracked JEE Main based on the results of first session, or you are hopeful to clear it, then you start participating in JEE Advanced. If you are very sure that you are not getting ahead with JEE Advanced, then you start participating in MST CET with full throttle efforts. So this is the planning for JEE students or engineering students. As far as NEET is concerned, we are a bit more comfortable, because you don't have JEE Main session 2, but there are students studying in NEET batches. They have taken general with the sole idea that they will also be participating in JEE Main and maybe MST CET. However, this time I cannot include everything, so it depends on you where to give more focus. I have planned 8 group tests instead of 4, and this will be pen and paper mode. 4 are based on the 11th syllabus, 4 are based on 12th syllabus. There is going to be 1 test each for full 11th and full 12th syllabus. So total will be 10 tests. And then we'll be starting with the full course test series. We have tried to do the same thing here. We are given, or we have planned 2 days quick revision before the test, and then test discussion or doubt clearing after the test, and followed by 12 full course tests, pen and paper mode. I'll display the schedule. For NEET, it is very similar. Tomorrow on 10th, we'll be having 1 paper. Time here, what I have shown, will be different for different centers. So please sync with your centers or center coordinators to get the time, etc., etc. Physics syllabus will be a bit less than what we have done in MST CET or the JEE Main, because we have got now more tests. And instead of maths, there is a biology consisting of botany and zoology. It will work on similar lines, and we'll try to complete the 10 group tests by 9th.
And from 12th, we'll start with the full course test and it will continue up to 2nd of May. And we may give 1 or 2 days for you to have your own assessment and appear for the final test on 5th May. So I hope this arrangement is suitable to most of you. There are some points which I want to emphasize again, even though I might have done this in the exclusive sessions for the students. The purpose of test series, if you don't understand this, then the whole efforts are wasted. Basically, it is for fine tuning with the real exam situation. फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है कि यू हैव टू बी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, academically tuned with the final exam. It is for the improvement by learning from mistakes. You can't avoid mistakes. So टेस्ट सीरीज में पहले टेस्ट में अगर मिस्टेक हुई तो हमने वो सेकंड इसमें रेक्टिफाई करने की कोशिश करना चाहिए. एंड अनदर थिंग, ये मैं बाद में भी आंसर करूंगा, बहुत से बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं. उनका यही कहना रहता है कि मैंने प्रिपेयर अभी पूरा हुआ नहीं है. सी, इफ यू वेट फॉर योर प्रिपरेशन टू बी कंप्लीट, दिस होल एक्सरसाइज, आई मीन होल एफर्ट्स विल बी वेस्टेड. तो आप ये एग्जाम को पोस्टपोन करने के बाद 1 साल के बाद भी एग्जाम रखेंगे तो भी प्रिपरेशन उसी स्टेज पे रहती है. ये फीलिंग ऐसे ही रहता है. सो दिस टेस्ट इज नॉट टू नो व्हाट यू नो, इट इज टू अंडरस्टैंड द मिस्टेक पैटर्न एंड व्हाट यू डू नॉट नो. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिस्टेक पैटर्न आइडेंटिफाई करना, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्क्स जा रहे हैं, वो हमको बचाने. एंड यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट यू डू नॉट नो. सो उस पर टाइम ज्यादा वेस्ट हम नहीं कर सकते. दिस इज नॉट द टाइम टू रेक्टिफाई द बैकलॉग, रेक्टिफाई द वीक एरियाज एंड सो ऑन. उसमें अगर हम जाएंगे, वो मोड पे अगर जाएंगे, हम सोचेंगे ऑनलाइन पढ़ेंगे तो हो जाएगा वगैरह, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, एक टाइम नहीं. सो यू प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट क्राइम टू कमिट मिस्टेक्स. मिस्टेक तो हो जाती है, but it is definitely a crime to not to bother about what you have done and to repeat the mistakes. ये नहीं होना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट इश्यूज रहते हैं, हर साल रहते हैं. नथिंग इज न्यू. इट इज ओनली थिंग यू आर डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, सो इट इज न्यू फॉर यू. सबसे इंपॉर्टेंट आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो मैंने बताया कि बच्चों को ऐसा लगते रहता है कि हमारी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई तो हम टेस्ट नहीं देंगे. एक अंदर डर रहता है कि प्रिपरेशन नहीं हुई तो मार्क्स कम आएंगे तो और फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा. मैंने पहले बोला मार्क्स कितने आ रहे वो जाने दो, कम आए तो भी जाने दो. उसमें से जो गलतियां हो रही है उसको ढूंढने की कोशिश करो. तो ये जो इश्यू आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का और लैक ऑफ प्रिपरेशन का, तो इट इज बिकॉज ऑफ कंपैरिजन विद अदर स्टूडेंट्स. It is because of comparison with your own school or 10th board score. You need to understand the score pattern, exam nature, and the targets. And you have to come out of this complexion. Another issue is many students, they ask me, नहीं हमारे अभी कोर्स हो गया है, कंप्लीट सिलेबस अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो गया था, वी विल बी स्टडिंग एट होम, वी आर कंफर्टेबल एट होम. When you say this, you are already going away from the exam. If देर इज ए सिचुएशन कि घर में बैठ के पढ़ाई होती थी या हो सकती है या अच्छी हो सकती है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट सभी के आते थे. ऐसे होता नहीं. सो दिस अ वर्स्ट आइडिया. देर आर मेनी स्टूडेंट्स टेलिंग मी कि सर हम तो अभी ऑनलाइन में है, तो ऑनलाइन का हमने कोर्स लेके रखा है, उसमें हम पढ़ेंगे. आई डोंट अंडरस्टैंड. इफ दिस इज सो मच सक्सेसफुल, देन ये जो लोग दे रहे हैं इस टाइप की सुविधाएं, वो तो दुनिया में नंबर 1 होने चाहिए थे. ये अंबानी ग्रुप या अडानी ग्रुप या और कोई ग्रुप होगा, मित्तल ग्रुप, उनसे भी इनकी संपत्ति ज्यादा होनी चाहिए थी. लेकिन ऐसा होता नहीं है. वो इट इज ऑन डिक्लाइन रादर. आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम इन पर्टिकुलर. सो दिस अ वर्स्ट आइडिया. इट अमाउंट्स टू फ्लाइट इंस्टेड ऑफ फाइट. एंड अंडरस्टैंड व्हाई दिस डज नॉट वर्क फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. When there is a pattern of exam is almost fixed,
there is no variation in questions or pattern or something like that level, then probably रट्टा मारने से वो हो जाता है, और रट्टा मारने के लिए इंस्टीट्यूट में आने की जरूरत नहीं है, घर में हो सकता है. That you might have done in 11th or 10th, but now for competitive examinations it is not possible because the question bank is unlimited. आप 10 साल भी प्रैक्टिस करोगे, 1 करोड़ भी क्वेश्चंस कर लोगे, तो भी कुछ ना कुछ नया आने वाला है. यू आर नॉट गोइंग टू गेट द सेम थिंग. The another issue is working very hard but no improvement, and the main reason of this is you are not in sync with the exam environment, and therefore sync नहीं है इसका मतलब है either you are using your techniques are faulty or you are not at all using techniques. This examination, I am again telling you, it is not testing your knowledge. That knowledge testing is one part of it. It is basically testing your skill, how best you can tackle the situation given in the question in the given time. So only reading is not going to help. No analysis and no remedial measures, अगर ये नहीं लेंगे तो हम इसमें आगे टेस्ट सीरीज भी हमारी कोई काम की नहीं है, वो दैट आल्सो इज वेस्ट. सो सिंपली राइटिंग टेस्ट ये भी कुछ लोग करते हैं. मैंने देखे हैं कि रोज 2-2 पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं ऑनलाइन की. Okay, I found this on the web for his waste writing test. Check it out. So I was telling you 300-300 400-400 टेस्ट दिए लोगों ने, फिर भी काम नहीं हुआ. So it is not important to measure the number or the quantity of the test, whether there is a quality. Are you using analysis for improvement? That is important. Students, you must try to solve wrongly answered questions and unattempted questions. इसमें मैं ये बताऊंगा कि unattempted questions अगर आपने इसलिए नहीं किए कि जो टॉपिक आपने टच ही नहीं किया, तो I will not force you to do that. बट जो रॉन्गली आंसर्ड है, आंसर तो किया, इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ तो आता था, फिर भी रॉन्ग हो गया, इसका एक ही मतलब है कि आपने रश मिस्टेक्स की है. तो जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आपकी मिस्टेक्स क्यों हो रही, कहाँ हो रही है, 5-6 जगह तो रहती है मिस्टेक की, वो अगर हम नहीं संभाल सकते तो ये सब चीजें जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, दैट इज अ प्योर, आई मीन sheer वेस्ट. You must try to find out gap. Mostly negative marks are due to rush mistakes and few may be due to conceptual mistakes. कंसेप्चुअल मिस्टेक होनी नहीं चाहिए कि अगर आपको मालूम है कि मुझे नहीं आता तो आप अटेम्प्ट मत करो, और जो करोगे आ रहा है, जो करोगे वो शांति से करोगे, रश नहीं करोगे, आपको अपना पैटर्न मालूम है, तो नेगेटिव मार्क्स खत्म हो जाएंगे एंड योर स्कोर विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. यू हैव टू अटेंड डिस्कशन सेशंस, क्योंकि सॉल्यूशंस अगर आप मांगोगे, सॉल्यूशन तो देना मेरे लिए बहुत इजी है, बट गोइंग थ्रू सॉल्यूशन डज नॉट हेल्प. ये अनुभव तो आपको अभी तक आ जाना चाहिए. हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही है, अगर हम खुद उसको नहीं ढूंढ सकते तो कम से कम टीचर के हेल्प लेके वो ढूंढे. पैनिक इज अनदर पॉइंट, और जैसे जैसे फाइनल स्टेप्स आते हैं वो पैनिक बढ़ता है. अब पैनिक का जो कारण है, साइकोलॉजिकल रीजन है, इट इज नथिंग बट द फियर ऑफ फेलियर. ये क्यों होता है? बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर, देर इज अ लॉट ऑफ पेरेंटल प्रेशर, मे बी सोसाइटी प्रेशर वगैरह वगैरह, एंड मेनी टाइम्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, खुद के भी होते हैं, आजू बाजू के लोगों के भी होते हैं, बट द रियलिटी इज नोन टू यू, नॉट यू, यूर ब्रेन, उसको मालूम है, और देयरफॉर उसको प्रॉब्लम होता है. सो कई बार ये भी होता है कि अरे पहले गलतियां हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया, 6 महीने पढ़ाई नहीं की वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक. सो प्लीज डू नॉट लिव इन द पास्ट मिजरी एंड ऑल्सो डू नॉट लिव इन द फॉल्स ड्रीमिंग फ्यूचर. प्रेजेंट पे आइए, जो है आज उसको अच्छा करने की कोशिश करिए. Effect of negativity. Negativity is not the marks, negativity of the thought. It spreads very fast.
एंड देयर इज अ ग्रुप साइकोलॉजी, और ग्रुप साइकोलॉजी नेगेटिव सोचने वालों की बहुत फास्ट और पक्की हो जाती। सो आई विल रिक्वेस्ट यू बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग कि ये करना है नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके पास वो जानकारी नहीं है तो यू कैन कॉन्टेक्ट फैकल्टी और एकेडमिक अथॉरिटीज एंड देन वी कैन गिव यू प्रॉपर गाइडेंस। सिमिलरली देयर इज ए इफेक्ट ऑफ पॉजिटिविटी ऑफ थॉट्स। उससे क्या होता है कि एक रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट होगा और आपका फियर ऑफ फेल्यूर खत्म हो जाएगा। एंड व्हेन दैट इज ओवर यू विल इवन गेट मोर देन व्हाट यू फील यू विल गेट। सो इफेक्ट ऑफ कूल माइंड अगर मैं आपको बताऊंगा तो ऐसा है कि अगर आपका माइंड कूल है एग्जामिनेशन में, एंड एग्जामिनेशन मतलब फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं है, पूरे ही ये समय में आने वाले, सो यू विल गेट एटलीस्ट 5% मोर इन द सेम एफर्ट्स विच यू आर पुटिंग नाउ। वेर एज नेगेटिविटी से जा रहे हैं, पैनिक में हो रहे हो, तो आपका स्कोर जो आज आ रहा है ना वो उतना भी नहीं रहेगा, 20% लगभग कम हो जाएगा। एंड दिस इज द स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल विथ मी। सीबीटी पोर्टल हमने पहले यूज कर लिया है तो आई विल नॉट डेमोन्स्ट्रेट दैट, बट पेरेंट्स आई विल रिक्वेस्ट यू वन थिंग। आई assume that you are with your words right now also. Please do not demotivate students or discuss the past miseries or something like that. This is not the time. Never ask questions to students or anybody. Anybody means academic authorities or faculties or something like that, whether he or she can do it or not. ये समय नहीं है, कभी नहीं पूछना चाहिए। नेवर आस्क। बात आती है मन में सभी के, क्या वह इसे बचे हुए समय में कर सकता है? आई डोंट नो, पूछो ही मत। इट ऑल डिपेंड्स दैट यू कैन डू एटलीस्ट बेटर देन व्हाट यू आर नाउ। ये तो हम बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं, आज जो उससे तो अच्छा कर ही सकते हैं, बट दैट ऑल्सो विल डिपेंड ऑन योर सिंसियर एफर्ट्स। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारा लॉस अगर पहले हुआ है तो उसमें से कुछ रिकवर होगा, कुछ नहीं होगा। इट्स ओके, इट्स ए लाइफ। See, remember, not everyone can go to IIT, NIT, etc. Not because he or she is less talented, but because seats are limited. दोष अपने आप पे मत लो। सीट्स नहीं है तो रैंक में अगर नहीं बैठे तो क्या कर सकते हैं? For every one successful IIT story, there are at least 10 successful NIT stories and maybe 50 successful state college stories. ये भी तो देखो। Students even get similar packages on an average, even if they graduate from different good institutions. I have seen that. I have been principal of many colleges. I know this. आप अगर जो भी कॉलेज आपको मिलेगा, अभी ये तो एग्जाम्स का होगा, एग्जाम्स के बाद में आई एम राइट नाउ टेलिंग यू दैट आफ्टर गेटिंग ऑल द रिजल्ट्स, जे मेन, सीटी वगैरह वगैरह, वी विल बी गाइडिंग यू हाउ टू गो फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, दैट इज अ सीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। उसके भी सेशंस हम करेंगे, और उसमें भी अगर आपको कोई दुविधा है तो आप सेंटर में आके डिस्कस कर सकते हैं। इफ आई कम टू नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, आई विल आंसर यू, मे बी फिजिकली सेंटर में या फिर जूम पे भी हम कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स along with the faculty and the coordinators. बातें और बहुत सारी हो सकती है, बट विल रिस्ट्रिक्ट टू द फोकल पॉइंट कि हमें अभी इस वक्त हमने क्या करना चाहिए। I have given you all the options, and I sincerely request all of you to participate with these positive things. I cannot make anything compulsory. I cannot get hold of each and every student and make him or force him to come to the institute and do this. Not possible. आपके मन में अगर ये समझ में आ गया है तो you start participating and see that you can get something better than what is available today. With this, if there are queries on in the chat box, Ava madam, can you find out if there are queries There in are no queries as such. Okay, Till this time, there are no queries as such. okay, no issues. If queries are there,
you can contact the center coordinators or that, and if I get these queries, I will answer personally also. So with this, thank you very much for joining this session. And I request all of you that if you know that somebody has not joined, then you spread the message to go through this video, which will be available there, and take advantage of this planning. Please sync with our planning. Thank you very much. All Thank the you so best. much, sir, for your input. Good night from myself. Yes. I hope the students are clear and they will be more focused now. Thank you so much, Dr. Vaidya. Thank you so much. Dear faculty and coordinators, I hope whatever I have discussed is very clear to you. Please try to help students with quick revision, test discussion, and so on. Let me tell you that the question papers we are generating centrally and will be sharing with all the things. But after generating the question paper, we need to validate for questions which are difficult or maybe out of course, etc., etc. So I'll be distributing this work to the faculty center-wise. Some data some papers I'll be giving to Chandrapur, or some to Sadar, some to East, and so on. And please spend or invest some time and see that all these question papers, all these test series papers are flawless. Because if they are flawless, our discussions will be nice and smooth. Results can be declared very fast. And unless students analyze the results, I mean, if we don't make the results available, they cannot analyze. And if they don't analyze, there is no meaning to the entire exercise. So my first priority from tomorrow has to be to declare the results immediately as fast as possible. And please help me in this regard. And attendance monitoring coordinators, you please see that the attendance is marked on the online roll sheets. Irrespective whether there is one student or 10 students or all students, I want to know who is doing what, because at the end, I'll tell you why it is required. At the end, when somebody gets good marks, he is not going to appreciate you or me or IINSIGHT. He will say that it is my efforts, and it is true. But if they don't perform well, then they will not say that it is their fault. They will directly give the blame to the institute and to the faculty that they are not planned, they are not done, and so on and so on. So at that time, we should have our records कि किसने participate किया, किसने क्या किया, and we should be able to correlate their participation with their scores in our tests and in the scores in the final exams. So it's a big process, and we have to do it at any cost. So this is from my side. You might have some queries, Sadar or East or Chandrapur. You can raise these queries. That session for parents is over. Madam, that is over now? Yes, sir. Live is over. Yes, sir. So come on. Okay. We'll conclude. Thank you very much.